Welcome back in International Economics class. Our today topic is foreign exchange rate. So what is foreign exchange rate? Currencies are continuously traded on foreign exchange market. Dealers adjust to changes in supply and demand and the prices change accordingly. So what is the foreign exchange rate? The price at which one currency can be converted into another currency is known as foreign exchange rate. फॉरेन एक्सचेंज रेट की एग्जांपल देख लेते हैं. The exchange rate is how many unit of foreign currency you can get for 1 unit of the home currency. In this case, the US dollar, because US डॉलर को इसलिए एग्जांपल मिल गया है क्योंकि वो एक इंटरनेशनल करेंसी है, ट्रेडिंग के लिए यूज होता है. तो हमने एग्जांपल ली है यूएस डॉलर की. फॉर एग्जांपल अब डेट मेंशन है कि 12/4/2017 की अगर यूएस डॉलर जो है उस टाइम पर यूएस डॉलर 1 US डॉलर को लेने के लिए इंडियन की कितनी रुपीस यूज होती थी. यानी कि 1 US डॉलर को हासिल करने के लिए आप अपने कंट्री के कितना अमाउंट को दे रहे हो, वो हमारे पास अकॉर्डिंग टू 2017 हमारे पास अगर 64.42 रुपी हो तो हम $1 उस टाइम पर ले सकते थे. अब तो ऑब्वियसली ज्यादा है. So a person could go to a bank and exchange $1 for 64.42 Indian rupee. This is called exchange rate. यानी कि एक पर्सन अपनी कितनी अमाउंट को देता है एक यूएस डॉलर को लेने के लिए. अब हम देख लेते हैं सप्लाई और डिमांड diagrammatically. So we have x-axis and y-axis plane, and here the supply and demand curve intersect each other, and when they intersect each other at that point, this is the point where market is at the equilibrium level. So at that time, according to the 2017 data, the US the equilibrium exchange rate is 64.42. So if the demand for the US dollar increases from D1 to D2, at that time the demand curve shift outward and the new equilibrium point indicates the exchange rate has risen to 65 Indian rupees per dollar. Diagrammatically इसको देख लेते हैं. On x-axis and y-axis plane we have supply and the demand curve, and when they intersect each other, this is the equilibrium point, and when the demand increases from D1 to D2, so the equilibrium point also change or increase from the previous one. So 60 the first equilibrium or the D1 line is the 64.42, and when the demand shift or outward or increases, so the equilibrium shifts from 64 to 65. What are the factors that affecting the currency supply?
Number one is imports. Domestic currencies must be supplied and exchanged into a foreign currency to purchase the imported goods. The second one is investment in foreign assets. For example, purchasing bonds or real estate in foreign country. The third one is speculation by investors in the foreign exchange market. The fourth one is government intervention. The fifth one is travel for business or tourism to the foreign country. Factors affecting currency demand. So what are the factors which affect the currency demand? The previous one is the supply demand, and in this slide we discuss the factors which affect the currency demand. The first one is exports, where the foreigner demand the domestic currency to make their purchases. The second one is foreign investment in domestic assets. Third one is speculation by investor in the foreign exchange market. Fourth one is government intervention. Fifth one is foreigners visiting for business or to changing demand. So we have an x-axis and y-axis plane where the exchange rate and the quantity, here the supply and demand curves which intersect each other or equate each other at their equilibrium point. At that time the exchange rate is 64.42, and when the demand shift outward, so the exchange rate also increases from 64 to 65. एप्रिसिएशन क्या होता है? जब एक कंट्री की डोमेस्टिक करेंसी जो है वो इंक्रीज हो जाए इन टर्म्स ऑफ फॉरेन करेंसी. अगर हम यूएस डॉलर की बात करें, अगर यूएस डॉलर जो है वो हमारे पास आ जाता है, 1 US डॉलर जो है वो 60 PKR के इक्वल हो, सपोज कर लेते हैं. तो इस टाइम पर 1 US डॉलर जो है वो 60 PKR के इक्वल है, और नेक्स्ट 2 ईयर में 1 US डॉलर जो है वो 20 PKR के इक्वल है. तो इसका क्या मतलब हुआ कि जो PKR है, पाकिस्तानी रुपी है, वो एप्रिशिएट हुई है, क्योंकि पहले 1 डॉलर जो है वो 60 का मिल रहा था और अब 1 डॉलर जो है वो 20 रुपीज का मिल रहा है. इट मीन्स देयर इज द एप्रिसिएशन इन द PKR, or the value of the PKR is higher than the previous one. Let's suppose this is the example of 2017, and now this is the example of 23. So in 2017 as compared to 2023, the rupee value is more than the 2017.
एग्जाम्पल इसकी देख लेते हैं. इफ द एक्सचेंज रेट स्टार्ट्स एट 100 Kenyan shilling USD and it rises to 105. पहले 100 था और अब 105 हो गया. So the dollar has experienced 5% appreciation. अब अगर हम डिप्रिसिएशन की बात करें, जो अभी एग्जाम्पल को हम लेकर चल रहे थे, कि पहले उसी को उल्टा कर लेते हैं कि $1 जो है वो पहले मिल रहा था 20 का इन 2017, 20 पीकेआर को ही ले लेते हैं. पीकेआर 2023 में कितने का मिल रहा है? 2017 में 2017 में वो मिल रहा है 20 रुपीस का, और 2023 में $1 जो है वो मिल रहा है 60 का. तो यहाँ पर जो एग्जाम्पल है डिप्रिसिएशन का वो कंप्लीट होता है कि 2017 के कंपैरिजन में 2023 को देखा जाए तो डॉलर की जो वैल्यू है वो बढ़ चुकी है, क्योंकि अब 60 पीकेआर को पे करना पड़ता है $1 को लेने के लिए. This is the depreciation. Depreciation is a decrease in the value of the country currency with respect to another currency. So example इसकी भी ले लेते हैं. If exchange rate starts from 100 and it fall to 95, at that time the dollar has experienced 5% depreciation relative. What is devaluation and revaluation? Devaluation occurs when the government or the central bank of a country controls the exchange rate and reduces the value of the domestic currency, whereas depreciation refers to a loss of value in the market when the exchange rate is floating. Conversely, revaluation is when the government or the central bank of a country control the exchange rate and increases the value of the domestic currency, whereas the appreciation refers to gain of value in the market when exchange rate is floating.